हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 7, दैट इज़ अर्थ, सन एंड मून। इस चैप्टर में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं अबाउट सोलर सिस्टम, सन, अर्थ, मून एंड एक्लिप्स। सो विल स्टार्ट फ्रॉम द सोलर सिस्टम, पर उससे पहले मैं कुछ बताना चाहूँगी अबाउट सेलेस्टियल बॉडीज़। सो बहुत से स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। सो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसे हम लोग स्काई में देख सकते हैं, ठीक है, जैसे सन हो गया, और अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स होता है जो कि रिवॉल्व करता है अराउंड द सोलर सिस्टम, राइट, जो कि रिवॉल्व करता है अराउंड द प्लैनेट्स, अराउंड द सन, एंड टुगेदर फॉर्म्स द सोलर सिस्टम। सो ऑब्जेक्ट्स जो भी हम लोग को स्काईज में दिखते हैं या यूनिवर्स में दिखते हैं, दे आर कॉल्ड एज celestial objects. So let us learn about the solar system, sun, earth and moon. Okay, first we are beginning from the solar system. So the solar system क्या होता है? सन और 8 planets जब रिवॉल्व करते हैं, सन और 8 planets जब रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन, राइट, वी नो दैट all the 8 planets जो भी हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन. So they together form solar system. Okay, they together form solar system. The sun and the 8 planets that revolve around the sun together form the solar system. Other than these planets, satellites of various planets, comets and asteroids are also the part of the solar system only. Okay, अब सैटेलाइट क्या होता है? तो जो भी सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं जो कि मूव करते हैं अराउंड द प्लैनेट, दैट इज ओनली अ satellite. Okay, so definition is given in the book, page number 81. A celestial object that moves around a planet is satellite. Okay, now you know that the sun is present in the center of the solar system, right? And all the eight planets are there that revolve around the sun. 8 planets के नेम हम लोग को बहुत ही अच्छे से पता होंगे. That is Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune, right? They all revolve around the sun in fixed path, which is called as orbits. Okay, and next we are going to talk about these 8 planets. That is, first we'll talk about Mercury. तो Mercury क्या है? सबसे smallest planet है and also closest planet है of the sun, right? देन कम्स वीनस. वीनस जो है वो बहुत ही हॉटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट प्लानट है इन द सोलर सिस्टम. देन अर्थ है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लू प्लानट because of the oceans, right? And its color, and it is only a planet where the life is known to exist, right? Then comes Mars. So Mars is also called as the red planet, right? एंड देन जुपिटर. तो जुपिटर क्या है? एक लार्जेस्ट प्लानट है ऑफ द सोलर सिस्टम. सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्लानट अगर कोई सोलर सिस्टम होगा तो वो है जुपिटर. देन सैटर्न जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्लानट है आफ्टर जुपिटर, एंड इट हैज़ कुछ रिंग्स होते हैं जो कि मूव अराउंड होते हैं सैटर्न के. एंड सैटर्न इज सो लाइट दैट if there was a tube of water big enough to hold it, it would float in it, right? Then comes Uranus. So Uranus जो होता है वो coldest planet होता है of the solar system. And Neptune जो है वो होता है सबसे farthest, यानी कि सबसे दूर होता है sun के, ठीक है? So Neptune is the planet farthest from the sun. Next I will tell you about Pluto. So Pluto, which was earlier considered as a ninth planet, is now known as dwarf planet. Okay, उसे dwarf planet कहते हैं. Now moving towards sun. Sun is like, sun is a star, right, that is situated at the center of our solar system, and all the planets used to revolve around the sun, right? It is a huge ball of burning gases. Its size is about 109 times that of the size of the earth. अगर मैं इसका मास बोलूँ तो इस मास इज its mass is 3,30,000. Okay, and 3,30,000 times that of the earth, and it's almost 99.86% of the total mass of the solar system. Hydrogen and helium are the gases, are the major constituents of the sun.
अगर हम लोग सन के बारे में देखें, उसका स्ट्रक्चर देखें, तो इट हैज़ अ काइंड ऑफ थिन आउटर लेयर विच इज़ कॉल्ड एज कोरोना, एंड द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सन इज कॉल्ड एज कोर. Okay, in the core of the sun, hydrogen gas continuously gets converted into helium. Okay, a very large amount of heat and light energy is released during this process, and जो energy release करता है sun in this process is called as solar energy. ठीक है. Next, moving towards the earth. So earth क्या है? इतना तुम लोग जानते हैं कि earth is the third planet of the solar system, right? It is surrounded by the envelope of air, which is called as atmosphere, and we have learned about this atmosphere in the previous chapter. If you have not seen my previous video, just go through it. You will understand about atmosphere properly in the chapter air and water. Okay, moving back, the atmosphere of the earth protects us from the harmful radiation of the sun, right? And the interior part of the earth is divided into three main layers, which is crust, mantle and core. Crust क्या होता है? outermost layer of the earth है. It is the outermost layer of the earth, and इसका जो thickness है वो ranges है total about 5 kilometer below from the ocean floor to about 70 kilometer below the land. The continents and oceans are on this layer. जो भी continents और oceans वगैरह हैं वो सब इस crust पे ही lie करते हैं. It is made up of rocks and contains all the things essential for life. Then comes mantle. Mantle क्या? तो it is the middle layer of the earth lying between the crust and core. The thickness of mantle extends up to 2890 kilometer. ठीक है. The outer region of the mantle consists of solid rocks. The inner region of the mantle consists of molten rocks. During volcanic eruptions, molten magma comes from this layer to the surface of the earth. Next is core. Core जो होता है वो सबसे अंदर का inner most layer होता है of the earth and is mainly composed of iron and nickel. ठीक है. And the outer core जो है is in a molten liquid state. It extends to about 3400 kilometer. The inner core is a solid sphere of mostly iron situated about 1220 kilometer from the outer core. Internal structure of the earth I have not given the picture, but still you can understand. If you have any problem, you can uh, contact with me through the comment section given. Now moving towards the moon. So moon is what? It is an object that revolves around the planet and is called a satellite, right? तो जो ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करता है किसी प्लैनेट के अराउंड, उसे सैटेलाइट कहते हैं. सबसे पहली बात. एंड सैटेलाइट होते हैं दो प्रकार के. पहला होता है नेचुरल सैटेलाइट एंड दूसरा होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट. नेचुरल सैटेलाइट वो होते हैं सैटेलाइट जो कि ऑलरेडी एक्सिस्ट होते हैं, नेचुरली एक्सिस्ट करते हैं. दैट इज कॉल्ड एज नेचुरल सैटेलाइट्स. एंड जो सैटेलाइट्स ह्यूमन मेड होते हैं या मैन मेड होते हैं उसे हम लोग आर्टिफिशियल satellites कहते हैं. So moon is also a satellite, but which kind of satellite? Natural satellite and of the earth. So the moon is the natural satellite of the earth, और वो revolve करता है around the earth in an orbit at the distance of about 3084 3,84,400 kilometer from the earth. And moon के पास अपना खुद का light नहीं होता है, right? We know that point. And the moon shines in the sky because it reflects the sunlight falling on its surface. जो सनलाइट उसके सरफेस पे फॉल होता है उससे ही वो चमकता हुआ दिखता है, उसका रोशनी दिखता है हमें. इट्स ऑलमोस्ट स्फेरिकल इन शेप. उसका शेप जो है वो उनका वो टोटल ऑलमोस्ट स्फेरिकल ही है. And it has no atmosphere, due to which it is neither very hot and nor very cold, and no life exists there, right? The surface of a moon has a lot of craters, right? And these are formed when huge rocks are called a huge rock, which is meteorites, hit its surface. There are also lots of mountains on the surface of the moon. एक चंद्रयान मिशन है that is Chandrayaan 1 was the first India's first unmanned mission to the moon. Okay, and it was launched on 22nd October 2008 from Satish Dhawan Space Center, Sriharikota, Andhra Pradesh. This missions helped to obtain a lot of information about the moon. Okay,
Now we are moving to our next portion, that is phases of the moon. Okay, सो हम लोग इतना जानते हैं कि जब भी हम लोग मून को देखते हैं तो उसका शेप्स जो है हर रात को अलग अलग होता है, लाइक कभी होता है एक राउंड बॉल, कभी होता है सी शेप्ड, एंड कभी होता है कुछ, कभी तो वो दिखाई भी नहीं देता, राइट, कभी वो दिखाई देने लग जाता है. सो ये डिफरेंट काइंड ऑफ जो वेराइड शेप्स होता है ऑफ मून, दिस इज ओनली कॉल्ड एज फेजेस ऑफ द मून. ओके, दिस इज ओनली कॉल्ड एज फेजेस ऑफ द मून. नाउ व्हाट इज एक्लिप्स? सो एक्लिप्स होता है, इट इज़ नेचुरल फिनोमिनन जब कोई एक सेलेस्टियल बॉडी जो है वो कुछ टाइम के लिए इनविजिबल या हिडन हो जाती है ड्यू टू द शैडो और एनी अदर काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, वो छुप जाती है, तो उसे हम लोग एक्लिप्स कहते हैं. ठीक है, सो एन eclipse is a natural phenomenon in which one celestial object or portion of it becomes temporarily invisible as it is hidden by the shadow of another celestial object. It happens when three celestial objects are in a straight line. Okay, now lunar eclipse. So when the जब अर्थ जो है, लूनर एक्लिप्स क्या होता है, बहुत एक छोटा सा टर्म है, उसमें क्या होता है कि जब अर्थ आ जाता है सन और मून के बीच में, सन और मून के बीच में जब अर्थ आ जाता है तो जो शैडो होता है अर्थ का वो फॉल हो जाता है मून पे, एंड दैट्स एट दैट टाइम ओनली लूनर एक्लिप्स फॉर्म्स. सो व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून, द शैडो ऑफ द अर्थ फॉल्स ऑन द मून एंड दिस कॉजेज लूनर एक्लिप्स. ठीक है, and a lunar eclipse can be partial, in which a part of the moon may be visible, or total, in which the moon is not visible at all. And this type and duration of a lunar eclipse depends on the position of the moon in the orbit. Next comes solar eclipse. Solar eclipse भी कुछ नहीं है, बहुत ही छोटा सा पार्ट है. सोलर eclipse में क्या होता है, it occurs, ये तब होता है जब सन जब मून सन और अर्थ के बीच में आ जाता है, सन और अर्थ के बीच में जब मून आ जाता है तभी सोलर एक्लिप्स फॉर्म होता है. ओके, सो डेफिनेशन कैन बी सोलर एक्लिप्स ऑकर्स व्हेन द मून कम्स बिटवीन द सन एंड अर्थ एंड द शैडो ऑफ द मून फॉल्स ऑन द अर्थ. ओके, देन इफ अगर तुम ऑब्जर्व करो ध्यान से तो तुम्हें दिख जाएगा, मतलब बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, राइट. नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सोलर एक्लिप्स? सो सोलर एक्लिप्स एनेबल्स अस टू स्टडी, राइट, हमें स्टडी करने देता है अबाउट द आउटर लेयर ऑफ द सन विच इज कॉल्ड एज कोरोना, उसके बारे में और इंफॉर्मेशन हमें पता करने में हेल्प करता है, राइट, विच इज अदरवाइज वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व ड्यूरिंग द ब्राइट रेज ऑफ द सन. Okay, now we must always remember to wear UV rays protected dark glasses while observing the solar eclipse at the bright day of the sun, which might can harm our eyes. Okay, now effects of eclipse on the earth. The rise and fall of the earth's surface, such as water in the oceans due to the gravitational pull of the moon and to some extent of the sun, is called as a tide. Sea water rises and falls twice a day. The effects of moon's gravity is more than that of the sun's gravity because of the moon is closer to the earth than the sun. Okay, now when the sun, the moon and the earth, जब sun, moon और earth एक straight line में फॉर्म होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन में दिखते हैं, then during the new moon days, okay, very high tides which is called spring tides are seen at that time. The combined force of gravity of the sun and the moon brings about these tides. If you want definition you can write it, I'm dictating. When the sun, the moon and the earth are in a straight line during new moon days, in bracket, very high tides called spring tides are seen. Next comes neap tides. So जब sun, moon एक right angle form करते हैं to each other, then we used to see the low kind of tides which is called as neap tides. So when the sun and the moon are at a right angle to each other, we get very low tides which is called as neap tides. Okay, and they usually occur twice a month, एक month में दो बार. ठीक है, twice a month during the first and third quarter of the moon. Picture or image of spring and neap tides I have given.
स्प्रिंग टाइड्स कब होते हैं? जब सन, मून और अर्थ एक स्ट्रेट लाइन में दिख रहे हैं। देखिए स्ट्रेट लाइन में मून, सन और अर्थ दिख रहे हैं। That is forming a spring tide. And neap tide is what? Neap tide is this when the sun and the moon are at right angle पे form हो रहे हैं। सन, मून और अर्थ, अर्थ नहीं बट सन और मून जो है वो राइट एंगल फॉर्म कर रहे हैं, then it is forming neap tides. Okay, so this is the end of this chapter. We have completed this chapter actually. So thank you everybody if you have seen my video. If it is helpful, then please like and subscribe it. And I hope you don't have any queries, but if you have, then you can contact me through the comment section अगर कोई भी problem हो तो. And the PDF of this exact kind of chapter I have given in the description. You can go and just download it in free. Okay, there is no cost you have to pay. Free में आप लोग इससे PDF को ले सकते हैं and उसे go through कर सकते हैं. If you have read the chapter, it will be really helpful, and if you have not, then it can also helpful in reading also purpose.